things. But you tell me one thing, India is a very diverse country. There's so many communities, castes, religious traditions, tribes. They have their thousands of years of history of evolution, the social system, the cultural norms. Why should they surrender their rights to the modern secular republic which came into existence in 1947? First of all, thank you very much to Abhinav and the organizers. This really is a very large panel and reminds me of the 8 p.m. debates. Although Arnab has gained a lot of weight since I saw him last. You have 60 seconds now. But I must also say this at the outset, Abhinav, that I am really proud to be Indian, proud to be one amongst you, because sitting next to me is a gentleman who is so safe and sound. He is, ये बाहर घूम रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं. 1 साल पहले ये जिसके साथ डिबेट में थे वो बेचारी घर के अंदर है. जब बेइज्जती है. ये वो देश है. तो जो लॉज बनाते हैं, जो इस देश को प्रोटेस्ट करते हैं, जिस देश पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो ये याद रखें कि रहमानी साहब इज सेफ एंड साउंड एंड ही इज हियर विद मी. Remember that always. Don't forget that. All those who think that this is not a democracy, remember that there is a woman, poor woman, all she did was just quoted some scriptures and her life has been ruined. Number one. Number two, it's very important to state, Abhinav, just to, not a personal remark, I was proud to be Indian. How is that? India बहुत छा गया. That personal. Yes. I am proud that you are safe. How is that personal? Absolutely. Let's refocus on the topic. Yes. और टारिश तो इमेज तब होगी ना जब इमेज हो. But let me. Let's come to spreading falsehood about me. Let's you come are to the topic, spreading rumors against me, and you are trying to demonize my personality this way, and I object to it. हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल. Anand ji, let's only focus on the topic, please. Your आपका objection सर आंखों पर, as long as my head is satisfactorily attached to my torso. Now I want to come. No, let's be done with it. Ramani साहब please सुनिए अब आप. Yes. Okay. Anand ji, please. So as far as UCC is concerned, I just want to say 2 things. You are right as to say why should communities suffer for the greater good. For that, Abhinav, I have to say this, that there are some universal goods, right? There are some things that are good, proven scientifically or otherwise philosophically, that are good universally. And one universal good that we have imbibed from our civilization, Hindu civilization, Indian Bharatiya civilization, is the equality of man and woman. There are like that, there are so many. And there are societies that have rules that sometimes do not conform to those universal goods. For example, it is scientifically proven that you will severely damage the body of a woman if you marry her upon puberty. This is scientifically proven. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. Proven. So to say that if you were to remove that, if you were to ban child marriage, you would make a society suffer. I'm sorry. You are reforming that society. You are going towards progressiveness. You are going towards what is scientifically proven to be correct. So we must remove discrimination like that. We must remove polygamy. We must remove child marriage. We must remove the fact that in some religions it is ordained that a woman would get half the inheritance that a man would. How is this justified? So I am absolutely for removing things that are patently wrong. They are anti-woman, they are discriminatory, they are patriarchal, and I am for adding things that go for the universal good. And that is why we need uniform civil code. Thank you. Thank you, Anand. And you know, my good friend Lokesh, Abhinav started off that he is a lawyer. He is a lawyer. He is a very dear friend. In audience में इनके clients अगर बैठे होंगे, वो अगले दिन कल जज से कहेंगे, मैं लॉर्ड मैं अकेले लड़ लूँगा केस. मुझे क्या कह रहे हैं ये? कह रहे we gave the world Gandhi. I hope you meant Mahatma Gandhi, not Rahul Gandhi. And he is proud of the fact. He is talking about. Let me quote Mahatma Gandhi. क्योंकि जब तक facts नहीं देंगे तब तक legalist का क्या चल रहेगा? Let me quote. This is what Mahatma Gandhi said. Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. And if they establish their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. Unquote.
And today is the जाके आप करें, don't interrupt. wait a minute. First of all, Anand, let's just Lokesh, talk about Lokesh, Mushfiq, not Gandhi. We can have a different panel on Of course, Gandhi. no, I just Lokesh, this is unfair. This is like a real TV debate. यार अभी interrupt मत करो. Give me 30 seconds. और my brother Vishnu जी जो बात करी है 494 की, I just want to ask him कि does he want Muslims to not practice polygamy or does he want Hindus to practice polygamy? आनंद सर, मतलब आज discrimination का किसके against हो रही है? That's a very direct question. You have to give an answer. But मैं एक चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. When a Muslim says I am against discrimination, he is against discrimination practiced in all other religions except Islam. When a Hindu says, like I am saying, I am civilizationally a Hindu. I might be a Darwinian atheist, but I am civilized. All of us are. No, you are a Nastik who go to Mahakaleshwar Mandir in With Ujjain. pride, with pride. और रहमानी साहब के ग्रैंडफादर जैन थे, तभी इनको भी. It's a fact. आपने खुद एडमिट किया है. नहीं, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ. Okay, Anand, let's. तभी इन्होंने कहा माय ब्रदर इज विष्णु जैन. दोनों के ग्रैंडफादर जैन हैं. मैं ये बताना चाह रहा हूँ. देखिए मैं हिंदू हूँ. ये अब मुस्लिम है ये. जब बेइज्जती है. So, fact of the matter is that a Hindu wants discrimination to be removed from everywhere. This is the difference. Please remember, as Rahmani Saab, he can marry a child. आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको legal position बता रहा हूँ आपकी, ठीक है? He can marry 4 wives. It is another matter if 4 women would like to marry him, but that's another matter. Third issue. खुदा ना खास्ता अगर ये अल्लाह को प्यारे हो गए, so the daughter will get half the inheritance as his son. And ये discrimination यहाँ हुआ. मेरा discrimination देखिए. I can have a Hindu undivided family and take benefit of tax. Take tax benefit. That is available to Jains, Hindus, and Sikhs, but not Muslims. I think I'm against that. we need to avoid Why being should personal discrimination- here about any Anand ji, co-panelists. it's not- I would, This is unfair. yeah. मैं आनंद रंगनाथ You cannot have an allegation. मैं आनंद जी की बहुत इज्जत करता हूँ. पढ़े लिखे आदमी लगते भी हैं आपकी चेहरे इज्जत से, करता हूँ. वेस्टर्नाइज ड्रेस पहने हैं, मॉडर्न से लगते हैं और सुना है आनंद साइंटिस्ट जी, भी हैं. रहमानी जी, let's not get इनको into लेबोरेटरी से discrimination. कम स्टूडियो में ज्यादा देखा है. कुछ गलत अगर काम मैंने- बदतमीजी में करने पे Anand ji, Anand ji. थोड़ी सी मुझे भी आती है. इन्हीं से सीखिए. बहुत सारा जी बहुत इनसे सीखिए. I अगर can't- question You are extremist moderator, sir. he is doing his work. Extremist moderator, new terminology. Towards Thank the you. rightist. You are extreme right. अब ये victim card निकाल लिया इन्होंने. जय हिंद दोस्तों. पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. Let me keep it very simple. You see, people accuse me because they fear fact समझना सबको वो लगता है. मैंने discrimination की बात करी. मैं कह रहा हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये हटना चाहिए. ये किसी ने सुना नहीं. जो मैंने मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सुना और उस पर चढ़ गए कि हाय हाय क्या बोल दिया. आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू माय फ्रेंड लोकेश. आर यू फॉर और आर यू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? यस और नो? I am against child बस marriage. बात खत्म हो गई. But please, But- please, let me what? complete. Let me complete. But- Let me complete. Let me complete. Let me बात आ complete. गया ना. Do you know ये Age बात of है. Consent Act ये 1891? बात है. Do you know Sarda Bill? It ये- took more than 150 years for our reformers so as to do away with the evil of child marriage. तो आप When डेढ़ I'm साल- talking डेढ़ साल और about, लगाएंगे listen, क्या? listen. What I'm saying that Is this it your case evil that the of- Muslim community of India is 150 years No, behind? what I say is when child marriage. So what I say is over here, if at all reforms are to be carried, अरे मुझसे तो पूछ 2018. लीजिए. आप मेरे बारे में बात hold किए on जा just a रहे हैं. second. Yes, मेरे fine. बारे में मुझसे भी रहमानी जी, रहमानी आप जी, मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते. I'm coming to you. मुझे बीच में बिठा के और सब लोग मुझे एक बैट बना के फाइटिंग कर रहे हैं. आप अपनी नीति साध रहे हैं. मुझे बिठा के बीच में. एक विक्टिम कार्ड नंबर 2. अच्छा, अभी रहमानी आदत जी, है. रहमानी जी, एक मिनट सवाल. थैंक यू. नहीं देखिए भाई, नॉर्मली मुझे 30 सेकंड लगते हैं या 10 सेकंड लगेंगे. रहमानी साहब, ट्रिपल तलाक का जो कुरान में नहीं है उसमें इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट हटा दे. सिंपल सवाल पूछता हूं, वर यू फॉर और वर यू अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट शाह बानो जजमेंट? यस और नो? नो. देयर वी गो. इट इज सो इजी टू एक्सपोज हिम. जो मैंने अभी इनसे पूछा, रहमानी साहब देखिए गलत है. मैंने अभी इनसे पूछा कि इफ खुदा ना खास्ता अगर आप अल्लाह को, हम सबको जाना है एक दिन, बुरा ना मानिए. Anand, no personal remarks. I'm just saying the First inheritance. reference ही मत दीजिए, Are you किसी और for को the दीजिए. inheritance that a daughter should get half the inheritance as a son? He said yes. Did you not say yes? 1/3. So you are for unequal inheritance being given? It is the prescribed law. By whom?
बताइए। देखिए, आप डिबेट को पर्सपेक्टिव में लाइए। इंडियन के आप लोग अगर बगैर पढ़े आप एक साइंटिस्ट को पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप लोग बगैर पढ़े मत कहिए, आपसे ज्यादा कुरान मैंने पढ़ी है। नहीं, अगर ये बात है तो जज कीजिए आप। नहीं, वो भी दिख रहा है। आप मुझे जाकिर नायक मेरे गुरु हैं, प्लीज। मान लिया इन्होंने। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एज शहजाद सेड करेक्टली, whatever is written in the constitution sooner or later has to be listened to, has to be whatever implemented. He talked about uniform civil code. अब मैं हर एक की हिपोक्रेसी बताना चाहता हूं। बीजेपी की हिपोक्रेसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये भी लिखा है कि यू मस्ट नॉट अलाउ काउ स्लॉटर। देयर आर इनफ बीजेपी रूल स्टेट्स दैट अलाउ काउ स्लॉटर। वहां पे ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल? मेघालय में, गोवा में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।